All right, hi everyone, welcome on board. Happy Guru Purnima to all of you guys. Let's get the party started. आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बहुत दिग्गज लोग आएंगे और बहुत बहुत मजे करने वाले हैं आज. और तुम लोग आगे ऑलरेडी काफी लोग इनको प्यार भी करते हो. So let's wait for all of them. Hi everyone, welcome on board. क्या हाल चाल अभी तुम्हारा? 30 सेकंड और वेट करते, तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे. आज है गुरु पूर्णिमा स्पेशल. आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक कैट. और सिर्फ मैं नहीं हूँ, आज हमारी पूरी टीम आई है. कैटकिंग फैमिली, सुधांशु सर हैं और अनीशा मैम है और एफएमएस के मोइनाक सर हैं, विश्वदीप सर, एनएमआईएमएस के आम लखनऊ के. बहुत बहुत मजा आएगा. हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड. शुरू कर रहे हैं बस सेशन. बस 30 सेकंड और वेट, थोड़ा वेट कर लेते लोगों का जुड़ने का और एंड तक जुड़े रहना. इट्स गोना बी रियली अमेजिंग सेशन, दैट्स माय प्रॉमिस. स्ट्रीम को लाइक ठोक दो यार, एक काम किया करो, स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए करे और अभी अपना फोन वन साइड में रख देना अभी, बिकॉज वी गोना हैव लॉट ऑफ फन टुडे. ठीक है, आज पढ़ाई की बात तो करेंगे और मजे तो करेंगे. कौन कौन आया? हाय मयंक, हाय सूर्यांश, गुड सीइंग ऑल ऑफ यू गाइस. और कौन है भाई? हाय नवीन, हाय विनीत, हाय सुमित. और कौन है भाई? गेमिंग प्रिंसिपल, क्या बात है. हाय सुमित. और सेम ही लोग चैट पे हाय हाय लिख रहे हैं. ऑलरेडी ठीक है. और कौन है भाई? हाय आराधित्य शर्मा, आई लाइक योर नेम यार. हाय खुशरीत कौर, ये हमारी रेगुलर है ना खुशरीत, तेरा नाम बड़ा बढ़िया यार. नवीन रोहरा. और कौन है भाई? हाय एवरीवन. चलो भैया, ग्रेट ग्रेट, गुड सीइंग यू टुडेस क्लास मिस. कोई बात नहीं यार सर, आप दिख नहीं रहे. दिखेंगे दिखेंगे, सब दिखेंगे मेरी जान, बस वेट कर थोड़ा सा और. ऑल राइट, हाय स्नेहा, हाय चंचल, गुड सीइंग यू. ऑल राइट, ग्रेट. हाय राधिका, हाय यूवी मिश्रा, ग्रेट सीइंग ऑल ऑफ यू गाइस. चलो भाई, बहुत ही बढ़िया. ललित पटेल, गौरव जोश, क्या बात. हाउसफुल है भाई आज तो. आज गुरु पूर्णिमा स्पेशल है तो हाउस तो फुल होगा ही भाई, क्यों नहीं होगा, है ना भाई. हाउस तो फुल होगा. ठीक है भाई. बिफोर वी गेट द पार्टी स्टार्टेड, लेट मी जस्ट स्विच ऑन द कैम एज वेल. कैन यू गाइस सी मी? नो यस, नो यस ऑन द चैट बटन विल बी हेल्पफुल. कैन यू गाइस सी मी? देख पा रहे हैं? हाँ है ना, देख पा रहे हैं? ऑल राइट, हाय एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड. ठीक है भाई, 222 लोग हो चुके हैं. आज देखते हैं 1000 टच होता है कि नहीं. आज हम ज्ञान तो बांटेंगे. बिफोर वी गेट द पार्टी स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार thanks so much for listening to all the stuff which we have been sharing on YouTube. I was checking my statistics. Nearly 1 lakh hours, 1 lakh hours of content you guys have seen, including shorts, including YouTube live. So thank you so much for love and affection. And CATKing is not only about me. It's a big team which is helping, starting from FMS to IIM Lucknow. वो सब लोग आएंगे. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरु वो जिसके साथ आपकी लय जुड़ जाए. एंड देयर आर सम ग्रेट पीपल, you'll be listening to them, very good souls as well. And all of them are from top business schools, top engineering colleges, and they are working with us. तो आज उनसे भी बात करेंगे. वेलकम करें सबको, लेके आए. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. थैंक्स यश, थैंक यू सो मच. ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट यार. ओके चलिए भैया, लेट मी जस्ट चेक विद हाय मोइनाक, आर यू लाइव? कैन यू हियर मी? इफ यू आर लाइव, यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर कैम एज वेल. इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन. Here also. Hello everyone. Hello, good seeing you. Hi Moinak, welcome on board. Moinak is joining in from FMS. और Moinak, क्या हाल चाल है भाई? All good sir. Happy Guru Purnima to you and to everyone over here. Special day. Good time to start for CAT. बिल्कुल, good time to start for CAT. ये बंदा, by the way, you'll be seeing Moinak. Moinak OP हो the chat के अंदर, people who already know him. And this guy is really amazing, and he's from FMS and cracked CAT 2018, 19? 2018, 18. CAT 18, yes. CAT 18 and yeah, FMS graduate and working in great companies right now. वो हम बाद में बात करेंगे. जब भी आप मॉक देते हैं, मॉक का जो फर्स्ट लेवल एनालिसिस होता है वो मोइनाक सर करते हैं. तो मोइनाक, वेलकम ऑन बोर्ड यार. Thank you so much sir. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let me just check with विश्वदीप सर. Hi विश्वदीप सर, are you live? If you are there, just switch on your camera. That's going to be great help. बहुत सारे लोग, 360 people are listening to us. And oh, I think Vishwadip. Hey Vishwadip, what's up, man? Rahul sir. Hi Rahul sir. Happy Guru Purnima. Happy Guru Purnima to everyone else as well. Lovely. विश्वदीप सर CMAT के ऑलरेडी टॉपर भी हैं. मैं इनकी क्रेडेंशियल बताना चाहता, बट मैं मोइनाक के भूल गया. बट एनीवे, मोइनाक भी टॉपर है, एफएमएस क्रैक किया तो आप जानते ही हैं. एंड विश्वदीप सर भी CMAT से क्या रैंक था सर आपका? 8, 9 में? ऑल इंडिया रैंक 9. ऑल इंडिया रैंक 9. And he cracked Narsi Monji as well. और CET के अंदर भी he's got 99 point odd percentile. And he teaches Quant with that. विश्वदीप, welcome on board यार. Thank you. And he's from a bad blood. एक बहुत ही गंदी कमेटी होती है कॉलेज के अंदर, उसका नाम है प्लेसकॉम. एंड ही इज इन द प्लेसमेंट कमेटी ऑफ नारसी मुंजी एज वेल. ग्रेट. लेट मी जस्ट वेलकम सुधांशु सर. सुधांशु सर लग रहा है आए नहीं है, मैं काफी देर से उनको कॉल करता. हाय सुधांशु, आर यू देयर? कैन आई सी यू देयर? Hey guys, happy Guru Purnima. Am I audible? I can't believe it. I hope you're all doing fine. So happy Guru Purnima to all of you. I think it's a special day, and as Moinak mentioned, good time to start studying. I'm sure a lot of people have started.
but I think good time to start studying also. I think that's very, very important. सुपर सुपर। सुधांशु सर का अलग ही फैन क्लब है भाई। विश्वदीप सर ओपी होता है चैट के अंदर, सुधांशु सर ओपी ऑलरेडी चल रहा है। क्या बात है, मानसी सूर्यांश स्नेहल, क्या बात है, क्या बात। सुधांशु का अलग ही फैन फॉलोइंग, ग्रेट। मोइनाक लाइव सेशन नहीं लेता, पर मोइनाक तेरे मॉक्स वॉक्स का अलग ही क्रेव है, and GDPI सेशंस का। बट एनीवेज पीपल हु जॉइंड रिसेंटली, दे आर ऑल पार्ट ऑफ CATKing फैमिली। हमारे 2 घोड़े और हैं, वो बीमार हैं। हमारे एक घोड़ी नहीं, क्या बोलेंगे हमारे पास एक हम इंजीनियर्स गैंग है। तो एक बहुत दिग्गज इंसान है अनीशा मैम। अनीशा मैम, इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैम, दैट्स गोना बी ग्रेट हेल्प। Hi everyone. All Happy right. Guru Purnima, guys. Happy Guru Purnima. Anisha ma'am is from Narsi Monji, an amazing person. If you join Narsi Monji, you're going to be seeing her inside as well. और NMAT के through हर साल nearly 200 बच्चे अनीशा मैम की गाइडेंस से CATKing फैमिली से जाते हैं। वेलकम गाइस, वेलकम अनीशा। और मेरिको में काम कर चुके हैं और बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं। और इस मुझे छोड़ दो, इस सारों का कंबाइंड पैकेज मिला के बता दूं क्या, अभी तो वैसे बड़े हो चुके हैं, बट चलो 1.5 करोड़ के आसपास तो होगा ही। बट ये चारों कहाँ, जो लोग मुझे पूछते हैं वाई MBA, एंड दैट्स द रीजन। और सुधांशु सर ने तो एक भी और अच्छी चीज करी है। सुधांशु सर बताइए, आपका MBA was much more fruitful than Moinak and me and FMS and Vishwadeep. Yeah. So I think most people know. In fact, I found my life partner there. So I'm very thankful to IIM Lucknow, for that. And I believe that, if that's a motivation, obviously in a good way, तो और मेहनत करो यार, 2 घंटे और बढ़ा दो दिन भर के। क्या बात है, क्या विश्वदीप सर को भी मिले हैं, बट वो बातें हम ऑफलाइन करेंगे। चलिए भाई, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो टुडे वी गोना गिव देम सम ज्ञान एंड we're going to keep this open ended, but I think whenever we do something, we're all MBAs, we need a PowerPoint. So quickly we made a PowerPoint. मेरी क्लास थी आज बैक टू बैक, इसको और सुंदर नहीं बना पाए, but anyway फोटो लगी है, नाम लगा, तो we are good to go. So आज we'll have Anisha ma'am and all these great people with us, and this is a Gurus Connect session. तो आपको अगला कुछ रॉक सॉलिड ज्ञान देके जाएंगे। I am going to be structuring my presentation in 5 different parts. So whenever they speak, I'll take some notes as well. We'll talk about mocks, we'll take about quants, we'll take about verbal ability, we'll talk about DILR as well. ये 5। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग चैट के अंदर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं उसको भी पिकअप करूंगा एंड विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। ठीक है भाई, डन है। सो why don't we get started? And Sudhanshu sir, I'll kickstart with you, and then Moinak, you can plug in anywhere. So जिनको नहीं पता अभी तक, Moinak sir takes care of everything at CATKing family when it comes to your mock test. पर verbal के भी ये गॉड लेवल का वर्बल एबिलिटी सॉल्व करते हैं। तो और जिन लोगों ने इनको ऑलरेडी देखा हुआ है वो पता है। सुधांशु सर क्वांट्स पढ़ाते हैं, अनीशा हम सब कुछ देखते हैं, और विश्वदीप सर भी क्वांट्स देखते हैं हमारे साथ। तो बट ऑल ऑफ देम हैज क्रैक्ड एग्जामिनेशंस, बट दे वर लव एंड अफेक्शन फॉर वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, हेंस दे आर टीचिंग दैट सब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलिए भाई शुरू करते हैं। सुधांशु सर, क्वांट्स के अंदर इनका टारगेट अगर 99% होगा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप क्या बताना चाहेंगे इनको? व्हाट्स योर टेक ऑन क्वांट्स? एंड देन मोइनाक, यू कैन प्लग इन, एंड Anisha and Vishwadeep, you can plug in as well. Let's start with quants. Yeah, so I think to begin with, I think the target that Rahul sir pointed out is the right target. For example, there is actually no difference between 99 and 100 if you think about it. If you reached 99, it means that you may deserve 100 also. So I think 90, अगर आप effort मारोगे तो 99 आ जाएगा. That is something which is definitely possible. किस्मत कितना भी खराब हो, 99 तो आना ही है अगर आपने effort सही लगाया. That's point number 1. Point number 2, for people, I think, so अगर 2 parts में divide करते हैं, अगर for people who have started और उनको maths में अगर struggle है, तो I'll say कि quants के point of view से dedicate time regularly. In fact, I believe that if you dedicate time regularly, तो आपको बहुत हेल्प करता है। इंस्टेड जो सबसे बड़ा मिस्टेक हम करते हैं कि हम वीकेंड में 6-6, 8-8 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद फिर पूरे वीकडेज 5 दिन वी आर आउट ऑफ प्रैक्टिस। अगर स्पेशली फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सो वी माइट नीड टू स्ट्रेच आवरसेल्व्स। ठीक है, कुछ चीजों के ऊपर हमको कर्टेल करना पड़ेगा। ठीक है, आई रिमेंबर, I am a movie buff. I really like watching movies and series, but during my preparation days, I used to really curtail. मैं movies देखना बंद कर दिया था. And after I had, I was done with my CAT, even watching Prem Ratan Dhan Payo was so amazing. So my point is कि आप, you will have to, put that, sacrifice. My friends always know me as
someone who's very social, very participative in the parties and all, but I had stayed away from parties for quite a long time. So number one, it's something which does not come easy, especially for people who are working. आपको थोड़ा sacrifice करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको regular काम करना पड़ेगा. And for people who have just started feeling a little difficult, focus on the bigger topics like arithmetic, algebra, geometry. These are the bigger chunks. If you talk about arithmetics, that's like 33% or 35% of your paper. So if you actually capture these bigger blocks, you can then focus on the different other blocks like modern maths, etc. जो थोड़ा सा difficult लगता है, to begin with, functions पढ़ना or logarithms पढ़ना and all of that. But basic topics जो हम सबने 6th, 7th, 8th में पढ़ा है, arithmetic, time, speed, distance, time and work, etc. I think these are good starters. So I believe quants के लिए this is how we should do, and I'm pretty sure that there are so many people, मैं ही बोलता रहूँगा तो बाकी सब सो जाएंगे. ठीक है, great. So let's talk about Moinak. What are your tips on the quant section, and that'll be great, and then I'll go to Bishwadeep sir as well. Acha, quick check. People on the chat, do you guys like me typing? If you guys like me typing, I can do that. Or if you guys just want to have a conversation like this, whatever you like, just type in PPT or just type in conversation. Con. ठीक है, मैं choose करूँगा, जो आप बोलेंगे वही करेंगे. हाँ, Moinak sir. Right. So as Sudhanshu sir rightly pointed out, guys, ये consistency का game है, right? And it's not just about one section. हर सेक्शन में कंसिस्टेंट होना है और उस कंसिस्टेंसी को आपको 2 घंटे के मॉक में भी अप्लाई करना है. That's the reason we come out with 40 mocks, not to show that we have great numbers. It's to keep you guys in the consistent play until D-Day. Okay. तो याद रखिए, CAT is not just about knowing things, it is about building stamina. अगर आप में वो stamina नहीं होगा, आप वो 2 घंटे का pressure नहीं झेल पाओगे, no matter how great you are. Okay, so please keep the consistency point in mind. I think that's the greatest advice a mentor can give you. Thanks, Sudhanshu sir, for that. And I completely agree on the arithmetic part. Arithmetic is so intuitive. It can happen orally. As soon as you see numbers like 33.33, 66.66, the 1 by 3, 2 by 3, 1 by 5, 2 by 5, 37.5, 62.5, एकदम रटा हुआ होना चाहिए. Okay, and it comes with practice. Why that's so important? It doesn't just help you in QA. You can equally apply it in LRDI. Okay, आपका LRDI भी automatically fast होना start हो जाएगा. So go in this order: arithmetic, algebra, geometry, and rest of the universe. ये 3 आपने crack कर लिया, guaranteed 99 आ जाएगा. In fact, I still remember when I was taking CAT long back. I think it's already been like 4-5 years now. काफी time हो चुका है. My dad told me, when आप 99 हर कोई लेके आ जाता है, उसके बाद ही fight start होता है. और अगर आप कॉल क्राइटेरिया देखेंगे, 99 से 99.5, ओके, कुछ कॉल आ जाएंगे गिवन योर प्रोफाइल, बट 99.5 से गेम स्टार्ट होता है. इफ यू रियली वांट टू बी हियर, जैसे संतोष सर ने बोला, वो सैक्रिफाइस 6 महीने का करना है, अब 6 साल का गेन करोगे. अब ये 6 महीने टाइम पास कर लिया, देन द स्ट्रगल इज लॉन्ग, गाइस. Okay, so absolutely just be focused, be consistent, and nail arithmetic from day one. Automatically things will be in place. Super, we are super. And just quickly on that 6 years ka gain, because you are after MBA, most of the roles you get are like manager roles. There's no called as. और मैं इनको अपनी लाइफ समझाता हूँ. नॉर्मल जो हमने पहले जी थी, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, एंड देन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग भी होता है, वो है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद जूनियर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर, फिर मैनेजर नहीं बनाते, फिर पहले टीम लीड, फिर जूनियर टीम लीड, फिर सीनियर टीम लीड, फिर जाके टीम लीड मिलता है 5, फिर जाके मैनेजर भी नहीं, जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सॉरी. तो एनी विच वेज, तो इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी. तो इफ यू गाइस आर लुकिंग एट दिस जंप, इट्स कंसिस्टेंट. अगले 5 महीने मतलब फाड़ दो और आग लगाओ. इट्स गोइंग बी लॉट ऑफ फन. ग्रेट यार, ग्रेट. विश्वदीप सर, ऑन क्वांट सेक्शन यार, व्हाट्स योर टेक ऑन क्वांट सेक्शन? So as rightly said by Sudhanshu sir and Moinak sir, कि consistency बहुत important है. So that is one thing even I would agree. But other than that, I've seen कि क्लास में बच्चे पूछते हैं कि कोई difficult topic हो गया, क्या difficult concept हो गया, तो people are like कि सर ये वाला topic छोड़ सकते हैं क्या? That is a very, I would say, a negative attitude to have right now at the beginning itself. Because अगर आपको 99 या 100%, like more than 99 if you're targeting, you should be like ready to do each and every topic, because तुम्हें नहीं पता कि किस टॉपिक से इजी क्वेश्चन आएगा, किससे डिफिकल्ट आएगा. शायद तुम्हें टॉपिक अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मे बी देयर इज अ इजी क्वेश्चन दैट विल कम इन कैट फ्रॉम दैट टॉपिक, एंड जस्ट बिकॉज यू फाउंड दैट टॉपिक डिफिकल्ट, यू डिसाइड कि मुझे नहीं करना है.
सो ये एटीट्यूड प्लीज मत रखिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से फुल अपना एफर्ट दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन से टॉपिक से इजी क्वेश्चन आ जाए. सो पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी टॉपिक इफ यू आर टारगेटिंग सम स्कोर मोर देन 99, एंड समटाइम्स like बहुत difficult topics से easy questions can actually like fetch increase your score from a 99 to a 99.5 or maybe even close to 100. So it is very important that you pay attention, especially at the beginning. ठीक है, towards the end maybe आपको पता चल जाएगा कि आपका strength क्या है, weakness क्या है, कहाँ आप ज्यादा गलती कर रहे हो, तब आप maybe you can do this selection part later on, but right now you should be giving equal importance to all the topics. But yes, arithmetic is the major chunk, उसको सबसे पहले कीजिए और उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे भी फोकस कीजिए. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. एक टॉपिक आया, एक क्वेश्चन आया, सर आई एम रियली वेरी लेस वीक इन क्वांट, व्हाट शुड आई डू? तो आई एम रियली वेरी लेस वीक इन क्वांट. तो मैं को चैट पढ़ के मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बेटा तुम्हारा वर्बल एबिलिटी वीक है, तो पहले वर्बल सुधारो. तो तो बेटे आई एम रियली लेस वीक नहीं होता, बट एनीवे छोड़िए. तो भाई पीपल हैव जॉइंड रिसेंटली, देयर 572 ऑड पीपल. वर्बल सुधारो, क्वांट सर सारी की सारी बात करने वाले हैं. और लेट्स क्विकली मूव टू अनीशा मैम. अनीशा मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अच्छा, एक और भी मैं पूछूंगा, मोइनैक एंड सुधांशु and Vishwadeep, my next question is going to be, सारे एग्जाम्स देने चाहिए, आपने कौन से दी थी? I'll speak to you as well. And because Vishwadeep sir ने 3-4 क्रैक किए हैं, CMAT के क्वांट 100% डायलर थे, फिर सुधांशु तूने भी क्रैक किया, और अनीशा मैम ने तो 3-4 और भी क्रैक किए थे, स्नैप भी क्रैक किया था. We'll talk about that. Anisha ma'am, what's your quant strategy? So I think for quants, it's all about having your concepts clear. So instead of just directly jumping to the difficult questions of CAT or XAT or anything which you feel scared about it, it's very much required to get your basic concepts right. जब तक वो clear नहीं होता है, don't move ahead. You can go and sit and read the solved examples of every topic 5 times till that gets into your head, especially for all the non-engineers or people who think they are weak. ऐसा नहीं है कि engineers cannot find quants weak. That is the case for many people there as well. So don't follow any of those myths कि सिर्फ non-engineers का maths weak है. Whoever finds maths tough, start with the ekdam basic concepts, do solved examples, concept builders n number of times, then solve further ahead. That's my strategy for quants. Super. तो भाई बैठ के बेसिक्स कर लो. That's what Anisha ma'am is trying to say. पहले बेसिक्स कर लो और उसके बाद keep moving to the other section. Great यार, this is lovely. अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मोइनैक एंड सुधांशु एंड विश्वदीप. पहले दूसरा क्वेश्चन, मेरे एक और नया क्वेश्चन आ गया. जो बंदा, सच्ची जी बताना है, जो बंदा अभी कैट की तैयारी शुरू कर रहा है, मुझे सवाल पूछते हैं, कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट? मैं तो इनको बोलता हूँ कर सकते हैं. मैंने खुद अबाउट, सच्ची बताऊँ तो 4 महीने रगड़ के पिया था, और लास्ट 1 मंथ सुपर रगड़ के. मुझे अभी तक अपना ऑर्कुट स्टेटस याद है, ईट स्लीप स्टडी. तब ऐसा रिपीट वर्ड इतना फेमस नहीं हुआ था, तो इट वाज ईट स्लीप स्टडी, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. दैट यूज्ड टू बी ऑर्कुट स्टेटस. दैट वाज लाइक लास्ट 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन. मोइनैक, जो बंदा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है जुलाई अगस्त के अंदर, इसको लग रहा है मेरे कैट का फॉर्म आने वाला है, भरूंगा, क्या वो फाड़ सकता है कैट? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एब्सोल्युटली सर. मैं जुलाई अगस्त को ऐसा नहीं देखता हूँ, इतना देखते हैं कि 19 हफ्ते हैं कैट को. 19 हफ्ते बहुत होता है 99 परसेंटाइल लाने के लिए. आपको एग्जाम के 60% मार्क्स लाने हैं, 99.7 परसेंटाइल आ जाएगा. सिंपल बात है. 60% के लिए 19 वीक्स मोर देन इनफ. Lovely. That's great. Anisha, what's your take? Let me go to Vishwadeep sir. Vishwadeep sir, what's your take? 100%. I feel कि dedicated plan एक होना चाहिए in place कि मैं कौन से टॉपिक कब करूंगा, and just stick to the plan. Don't look at the big picture initial itself. पहले छोटे गोल्स सेट करो, and वो गोल्स अचीव करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली योर एंड गोल विल बी सॉर्टेड. So just make a plan and stick to it. Great. Anisha ma'am, what's your take on that? मतलब जो बंदा तैयारी शुरू कर रहा है, अभी से करेगा, रिगर मारेगा, और दिमाग मतलब नॉर्मल होना चाहिए. हाँ, नॉर्मल होना चाहिए और डेडिकेटेड होना चाहिए. What's your take? Definitely. I think this is one thing which you would have heard sir tell you all a lot of times. It's all about how badly you want it. And that's actually very true. So sir spoke about 4 months. I studied for 1.5 months. I had just one motivation. I want to get the hell out of my IT job. So 1.5 months, whatever it takes. Everybody who's studying 2 hours, pull in more number of hours. So it's, you want to get out of there, you put 6 hours every day. So it's definitely possible. You have 4.5 months, which is 3 times the time I had with me. So you definitely can get it. क्या बात है. सुधांशु सर, अभी स्टार्ट करना है कैट का, क्या मैं कर सकता हूँ? ये हर महीने मुझे सवाल आता है, तो मैं पूछ रहा हूँ, एक ग्रुप में पूछ लेते हैं आज हम. आई थिंक काफी वैलिड क्वेश्चन है. आई थिंक वी कैन रिलेट इट विद टाइम एंड वर्क. ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बंदा लेट्स से अगर फरवरी से कर रहा है, आप जून जुलाई में शुरू कर रहे हो,
कोई अगस्त में भी कर सकता है, there is no problem in that. The only thing is you will have to put that required effort, और वो required effort हर इंसान के लिए variable होगा. So for example, if someone has a prior experiences, थोड़ा quant वगैरह prepare किया है, placement वगैरह की तैयारी करी है पहले, तो slightly easier for that person. ठीक है, कोई engineer है तो उसको obviously verbal के अंदर ज्यादा effort मारना पड़ेगा. So I think it's variable, but absolutely possible. I will say कि अगर आप बिल्कुल एफर्ट मारो एंड इफ यू आर डे इन डे आउट यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दिस, तो कैसे नहीं होएगा, मतलब चांस ही नहीं है कि नहीं होगा, मतलब आई कांट थिंक ऑफ इट. Great, that's lovely. My 2 cents on that is that 3 तरह के बच्चे होते हैं. एक तरह के बच्चे जिसको एक बार पढ़ के बात समझ आती है, होशियार सुधांशु सर जैसे बच्चे. दूसरी तरह के बच्चे सेमी होशियार बच्चे, मेरे जैसे बच्चे जिनको 2 बार पढ़ के बात समझ आती. तीसरी तरह कोई यहाँ पे कोई है नहीं जिसको 3 बार पढ़ के बात समझ आती है. बट 3 तरह के बच्चे होते हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप सुधांशु सर हो के सुमित सर हो, राहुल सर हो, जो भी, हाँ आपको पता होना चाहिए. अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है, then whatever time you have, you know that you have to put in more efforts, isn't it? And you and in today's world the best of the resources are available. रात को 12:20 है और हम लोग YouTube लाइव कर रहे हैं. FMS के टॉपर बैठे हैं, निशा मैम, नारसी मुंजी टॉपर, सीमा टॉपर्स, सारे बैठे हुए हैं. तो resources are available, and I always say everything is possible in this world. It's only how badly you want to do it. तो decide करो और लग जाओ. If you ask me, last 1 month में भी लोगों ने CAT फाड़ा हुआ है. That's not the best advice I would give. But I know people who cracked CAT in 1 month as well. They know and they were really pick and choose करके वो रगड़ देते हैं, फिर रगड़ देते हैं. And in fact बहुत ही कम इंजीनियर्स होते हैं जो राहुल सर टाइप वर्बल में तोप होते हैं. तो इंजीनियर्स के लिए मैं स्पेशल बोलूंगा कि भाई वर्बल एकदम मतलब जी जान लगा दो. आई थिंक दैट इज वेयर सबसे ज्यादा कटता है. तो इंजीनियर्स के लिए तो आई विल से कि भाई वर्बल में बचाना है एकदम बहुत ज्यादा. आई थिंक मुझे याद है आई हैड पुट माय टाइम डिसप्रोपोर्शनेटली into verbal, so I think that really helped me. तो आप जहां एफर्ट डालोगे वो इम्प्रूव हो जाएगा. So I think that is how it works. मैंने सुना आप भी तोप हो रहे हो वर्बल में, और वीकेंड पे आप वर्बल so I think thanks to Moinak, I think Moinak is designing is doing some really good mocks. I think I've solved 5 mocks and really good level. So I think a lot of people who are here, if you are not doing the mocks, do take the mocks. Really amazing. मैं भी वर्बल सीख रहा हूँ इस चक्कर में. He's being modest. ये बहुत स्टड लोग हैं. अच्छा, इनको थोड़ी सी प्रोसेस बता देते हैं. People have joined recently. We are just doing a Guru Purnima celebration. तो थोड़ा सा आप चिल करिए हमारे साथ, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं. कुछ तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन हो तो we can talk about that. अभी तक हमने क्वांट सेक्शन कवर किया है, and we've also spoken about अभी कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कि नहीं. Moving in forward, I want to make it as interesting as possible. तो हम लोगों ने एक बहुत ही प्रोसेस बनाई हुई है, ध्यान सुनो. Whenever you join CATKing or plan to join CATKing soon, तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. पहले चलो मैं तुम्हें पढ़ाई का बताता हूँ. When you guys listen to my YouTube videos, उसके बाद मैं तुम्हें क्लास में मिलता हूँ हफ्ते में 2 दिन. But then I give it to Sudhanshu sir, and then I give it to Vishwadeep sir. फिर और दिग्गज लोग हैं, साहिल सर, कृष्णा सर of the world. ये आके आपको नर्चर करते हैं over the period of time when it comes to quants and DA. Process number 1. एक बार तुम यहाँ से सेट होते हो, इनसे पढ़ाई लिखाई करते हो, फिर तुम्हें मिलते हैं मोइनाक सर. मोइनाक सर बैठ के along with IIM faculties, मोइनाक सर is from FMS, बना के बैठाते हैं मॉक. और मॉक ऐसे कि आपके मतलब धुएं तो निकलेंगे, बट अच्छी बात है कि मोइनाक सर जब मॉक्स कर रहे थे तो मैंने उनको बोला सर आप भी सॉल्व करके बताओ. तो मोइनाक सर क्या करते हैं, अब मैं मॉक्स के बारे में बता रहा हूँ. व्हेन यू गाइस गिव 2 आवर्स का मॉक, उसके बाद मोइनाक सर बैठेंगे और 2 घंटे का मॉक खुद देंगे. हाँ, ये मेरी फेवरेट चीज है जो मोइनाक ने की. 2 घंटे का अटेम्प्ट देंगे, और बेस्ट चीज है ये सोच के अटेम्प्ट देते हैं अपना. और मोइनाक तेरे वीडियो सुन रहा था मैं, तो सोच, अगर तुक्का भी मारा ना, तुक्का भी सोच के मारता है. अच्छा मुझे ना A B में से B लग रहा है, तो ही विल सॉल्व दैट मॉक फॉर 2 आवर्स, और तुम्हें 80 to 90% समझ आ जाएगा. स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा भाई तो मोइनाक तूने मतलब लेवल इतना बढ़ा दिया ना, लोग अभी इस बार वर्बल में फाड़ने वाले हैं. और we'll talk about verbal as well. And then संडे को बैठ के सुधांशु सर, और जिनको नहीं अभी भी समझ आया, he spends around 3 hours. सुधांशु सर 3 घंटे लग जाते हैं मॉक पेपर सॉल्व करने के लिए. Absolutely. 3 घंटे, बहुत ही बढ़िया. तो भाई तुम 2 घंटे तुम्हें बस मॉक दे के आना है हमारे पास. उसके बाद तुम्हें एक मेरी बात सुनते हो, मैं SPJain बॉम्बे, देन आपको मिलेंगे मोइनाक सर, पेपर सॉल्व करेंगे FMS, फिर IIM लखनऊ. इतना पढ़ने के बाद दिग्गज लोगों के पास कैट क्रैक होना ही होना है. हाँ, तो जो लोग रियल कैट मॉक्स नहीं दे रहे हो, बहुत बहुत अमेजिंग मॉक्स हैं. ग्रेट यार, लेट्स या. So they have 2 more things this time with the mocks. You have to gradually level yourself up to reach Moinak's and yours and Sudhanshu's level of 99 percentile. So they'll have 2 more videos. 1, how to reach 90 percentile. 2nd, how to reach 95 percentile for every mock. So that they can gradually, scale their level up.
So don't get intimidated by just directly, I'm not getting 99 as well. क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट. तो तुम 2 वीडियोस और भी देख सकते हो. बहुत मोइना, वो तुमने किया है क्या? Yes, sir. Lovely, lovely. Let's jump to the चलो verbal ability का एक बार अपन फटाफट एक पोछा मार देते हैं, and then we'll talk about DLR, then we're going to talk about mocks as well in interest of time. हाँ भाई, people on chat, are you guys enjoying so far? मैं एक आधे क्वेश्चन देख लेता हूँ. गैप ईयर का क्वेश्चन आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सर्च करो CATKing गैप ईयर, कोई टेंशन की नहीं. Is mock test free for CATKing? Mock test is not free, but it's like really dirt price low, but आप चेक करो, it's going to be really amazing. और कोई सवाल? बढ़िया सवाल. सर 3 घंटे को 5 घंटे का मॉक बना दो. 3 घंटे के मॉक को पता नहीं क्या बोल रहे हो. ओके सर, डू यू प्रोवाइड पर्सनल काउंसलिंग? नो सर, आई एम एन आईआईटी मद्रास स्टूडेंट, केमिकल इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू एमएस ड्यू टू कोविड एंड आई रियली वांट टू डू एन एमबी, शुड आई प्रिपेयर? ओके, तो तू एमएस कर रहा है. ओके, तो एमएस के बाद एमबी. भाई बस इतना मत पढ़ो, एक आधी चीज छोड़ दो किसी और को भी. ओके, एनी व्हिच वेज, ठीक है, करना. हाँ, करते हैं काफी लोग. अगर एमएस के बाद पीएचडी नहीं करनी है तो ठीक है, डन है. आई गॉट फियर ऑफ वर्बल एबिलिटी. चल भाई, तेरा डिटेल आंसर करते हैं. गुड. ओके, पीपल ऑन द चैट, होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द डिस्कशन. एक छोटा सा काम कर दीजिए यार, तुम लोग आए हो. सांशु, इनको वो लाइक नहीं कर रहे. 661 लोग. मैं ही बोल रहा हूँ कि अब तो वर्बल डिस्कस करना है. हम लोग लॉग ऑफ कर लें, आप ही बताओगे सब. नहीं, मैं इनको बताते रहता हूँ. आज मोइना से सुनेंगे. मोइना का वीडियो देख के मैं भी बड़ा इंस्पायर होता हूँ. टक्कर दे रहा है मेरे को आजकल वर्बल एबिलिटी में. मैंने बोला नो सर, रहने दे, तेरा अलग कल्ट बन रहा है अभी. बच्चे बहुत बहुत प्यार करते हैं तेरे मॉक्स, जो मॉक्स देता है और जो वीडियो सुनता है वैसे. बट गुड जॉब ऑन दैट. आई रियली लव्ड इट मैन, लव्ड इट. चलो भाई, लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी. मोइना सर, आप स्टार्ट करिए. पहले अपना वर्बल का परसेंटाइल बताइए. बिफोर मोइना स्टार्ट्स, ये ना एफएमएस के बड़े फैन है यहाँ पे लोग, और जिनको एफएमएस जाना है, FMS is the only college in the country जो वर्बल को ज्यादा भाव देता है. 40% वेटेज इज वर्बल एबिलिटी और 30% वेटेज इज क्वांट एंड 30% वेटेज इज LRDI. सुधांशु, पता था क्या तेरे को? मेरे को भी रिसेंटली पता चला है. हाँ, मुझे जब मैं नहीं जा पाया तब मेरे को पता चला. अच्छा. कि वर्बल पे थोड़ी और मेहनत करनी थी. Alright, great. Moinak, what is the verbal percentile? What are your tips on verbal ability? Right, sir. So back in my time, 102 marks का होता था verbal ability. Okay, so out of 102, I scored 87.5. That was 99.95 in my year, verbal ability. And जब मैंने इसका CAT 2019 में दिया था, ऐसे ही just for fun. So then I scored 99.99 in verbal ability in both my attempts. Okay, wow. So this is the brief history with verbal. And just for your information, guys, मैं भी engineer हूँ. Okay, दिल से electronics engineer. So ऐसा कुछ नहीं है that we engineers can't ace verbal. So verbal ability, I follow a very, very simple funda over here. Rahul sir is very well structured it and broken it down for you guys. So usi funde ko I'll just pick up. So even what sir follows and I follow is that, ekdam voracious reader, if somebody who has a very high vocabulary, wahi verbal putta nahi. Very honestly, verbal ability is LRDI without numbers, aur kuch nahi hai verbal ability. If you read the passages, I can guarantee you guys, you open CAT 21, you open CAT 2022. If you find any word which is more than 3 syllables, I'll change my name. I'll stop teaching CAT altogether. Okay? 2 syllable के words होते हैं. So that is something you can easily understand. ना वो difficult passages देता है, ना ही वो complicated चीजें देता है. The complication is in the question. ठीक है? तो जैसे राहुल सर, अपने कोर्स में वो फॉर्मुलेट करते हैं, he breaks it up question wise. तो उसी टारगेट को आपको लेना है. आप एक मॉक लो, ओके, फिनिश द होल मॉक, सिट विद द एनालिसिस एंड सी ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा था. वाज इट माय पर्सपेक्टिव, वाज इट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, वाज इट सम पर्सन इन द पैसेज, दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव, दैट इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड. किसका पर्सपेक्टिव है, कहां आंसर जोड़ना है, आपने वो सीख लिया. वंस यू अंडरस्टैंड द लिंकेज between the question and the answer, that's about it. Okay, so very briefly, I'll just tell you what needs to be done for verbal. First, Rahul sir's, lessons, YouTube lessons or lessons as a part of CATKing, your choice. Okay, although I will suggest the next one because that gives you a more detailed approach as to how to approach verbal ability. Okay, that's lesson 1. Second, consistently take mocks. In mocks, verbal ability will be a 40-minute section, but you need to spend at least 2 hours and 40 minutes analyzing that section. One mistake that everybody does is that you see, I got this question wrong. You see why is the option correct, you move on. No, that's not the way to approach verbal ability. Please understand, if option A is correct, there is a reason why B, C, D will be wrong. This is not LRDI, where the number is different and you can just skip it out.
there is a very specific reason. Maybe there's a word that changes the meaning of the sentence, because of which that option is wrong. Please spend time in understanding why 3 options are wrong and why 1 option is correct. Once you start doing that, a cycle will develop. And I'll be very honest with you guys, verbal ability does not improve in one day. So when I started, first mock which I gave, I think it was 29th May, 1st June approx. I scored 34 marks in verbal ability. I scaled it up to 87. Okay, Wow. Just like a typical engineer who was, maybe average 34. I remember it was 47, 56, 62. And trust me guys, जो 87 CAT में आया था ना, I've never scored 87 in any mock. So ऐसा कुछ नहीं है कि you reach your peak in mock, you actually reach your peak in CAT. In fact, in mocks, I think the highest I've ever scored is 99.68, and CAT में जाके वो 7.1 में convert हो गया था. Brilliant. So it's a bell curve. Okay, so verbal ability, guys, it's going to be a bell curve. Sir knows much better than me as to how to approach the particular section, so I will leave that to him. All I can tell you is that be consistent, understand the question, understand the options, and you're done. And एक चीज which I'll always recommend, never switch RCVA. No. Yeah. Find your calling. You want to do VA first, then do RC, absolutely fine. You want to do RC first, then do VA, absolutely fine. But be very cautious of time management. Great. Okay? Great. And just last thing, so as Anisha ma'am told, we are building it part by part. So in a mock, when we tell you 90 percentile आने के लिए इतना करना है, approach it in that way. If I tell you 6 questions will get you 90, in your mind keep 8 questions will get you 90. Yeah. You'll start getting 8, then make it 12, then 16. That's how we move ahead. That's my 2 cents. This is so amazing, यार. तू ऐसे मेरी तारीफ कर रहा है, भाई बहुत स्ट्रेट आदमी है भाई, बहुत स्ट्रेट आदमी है. Thanks Moinak for spending time on verbal ability. तेरे कारण हम भी दोबारा पढ़ रहे हैं. सुधांशु सर भी हमारे गॉड हो गए verbal के अभी. हमारे 3-4 टीचर हो गए verbal के. Good यार, thanks. It's lovely. I mean on a lighter note, but you're doing amazing. Great. Vishwadeep sir, what's your take on verbal ability? What do you want to tell all these students? Before that, Vishwadeep sir, 740 people live और नियरली 400 लाइक्स हैं भाई. लाइक ठोक दीजिए. बस एक काम किया करो, मैं और कुछ मांगता नहीं हूँ. और आज गुरु पूर्णिमा के दिन है. आज मैंने क्लास में इनको काफी दिग्गज वाले क्वेश्चन पढ़ाए. तो एक लड़का बोलता है, सर लग रहा है गिफ्ट है हमारी गुरु पूर्णिमा का. वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टुडे. बट या स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए और देखते हैं. शायद आई थिंक वी शुड टच 1000 पीपल टुडे. या तो भाई या लेट्स बिगिन. विश्वदीप सर, 2 cents on verbal ability, then we're going to jump to the mock sections quickly in interest of time. Sure. तो like I'm also an engineer, तो मेरा भी verbal इतना अच्छा नहीं था when I started up, and धीरे I realized कि obviously एक चीज पे focus करना पड़ेगा पहले. या तो like I used to divide my time कि I would maybe give 2/3 of the times to, so हमारा 1 hour होता था. We used to have 1 hour verbal, so like 40 to 45 minutes on the RCs and then 15 minutes on the VA part. So initially RCs में the number of attempts were not going good, the accuracy was not good. So basically उसके बाद जो analysis होता था ना, I have learned majority of my like verbal part through those analysis, as in कि मेरी thinking क्या थी, author की thinking क्या थी, whether it was matching or not. And going ahead, I used to make sure that I try to think in a way, or maybe my thought process in a way कि जो मैंने पिछले वाले इसमें mistakes करी थी, वो mistakes repeat ना हो. So learn from your own mistakes and try to implement it in the next mocks. And धीरे धीरे करके पहले 3 RC कर लिए, फिर 4 RC कर लिए. अभी आप लोग के तो number of RCs कम है. So make sure that you know which particular part to start first. Maybe do trial and error in a few mocks. कभी RC से start कर लो, कभी VA से start कर लो. See where you're scoring the maximum and then try to replicate it in the actual CAT exam. And even for me, just like Moinak said कि verbal में he scored the maximum in the actual CAT, मेरा same quants में हुआ था. Like I had around 78 as a score in my quants, and that was the maximum that I had scored, more than any mock. So Superb, yeah. Superb. That's great. Sudhanshu sir, what's your take on verbal ability? I think mostly a lot of things covered. I believe trying to skip the question. Mostly the answer is already said. So I think generally it was my GD strategy also. Back in college अगर GD tank करना है तो मैं यही कहता था कि सब लोगों ने बड़ा अच्छा बोला, बहुत मजा आया. So I think my only thing that I believe has helped a lot of people, including me, is that I was reading a lot during that period. So actually reading itself helps you improve a lot. So मेरा एक student था, मेरा एक
फ्रेंड था, हम मिलकर प्रिपेयर कर रहे थे फॉर प्लेसमेंट्स, यू नो, दैट वाज द फाइनल ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उस टाइम पे हमने ऐसे मजे मजे में कैट दे दिया कि देखते हैं फ्यूचर में तो कैट देना है, अभी ऐसे मजे मजे में दे देते हैं। सो आई गॉट नियरली 100 इन क्वांट्स, दिस गाय गॉट नियरली 100 इन वर्बल। मैं सोच रहा था कि यार इसका वर्बल वाला स्कोर अगर मेरे को मिलता तो भाई मैं फ्रेशर और एमबीए। तो बट आई रियलाइज्ड कि फिर मैंने कुछ करता तो है नहीं, ठीक है, यू गॉट 100 इन वर्बल। And then he was like, and I had seen him literally used to read a lot, मतलब वो बहुत रीड करता था, even you know he used to read bedtime stories, सुबह उठ के कुछ रीड कर रहा है, इवनिंग में चलते चलते न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। So reading itself, and practically उसने उसके अलावा कुछ नहीं किया था, मतलब उसने कोई आरसी अटेम्प्ट नहीं किया था, nothing, मतलब he was just an avid reader, मतलब he was into reading, उसको रीडिंग बहुत पसंद था, and that itself, so I think you know to some degree it will impact everyone. तो अगर हम reading करें तो I think everyone should improve you know some bit, I believe. Superb, that's lovely. Okay, jump into the last section quickly. Let's talk about mocks. हमने DLR थोड़ा skip कर दिया because I think interest of time, काफी लोग already 708 लोग गए थे। हम करें DLR भाई, बताइए पहले mocks के बारे में बात करेंगे, DLR के बारे में बात करें, और फिर तुम्हारे कुछ क्वेश्चन लेते हैं मोनाक। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंजीनियर्स एमबीए करते ही क्यों हैं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चैट के अंदर। बेटा इसका आंसर रेडी कर लेना, क्योंकि तुम्हें मरते दम तक ना एमबीए के बाद भी लोग सवाल पूछेंगे, और इंटरव्यू में मरते दम तक नौकरी भी चेंज करोगे ना, यू आर एन इंजीनियर, व्हाई डिड यू डू एमबीए, ये सवाल तुम्हें पूछते जाएंगे। वो हम ट्रेन कर देंगे, तुम्हें एक स्टैंडर्ड आंसर होता है उसमें बस अपना नाम बदलना होता है। टेम्पलेट बाकी सब फिक्स्ड है, ठीक है, कि मैंने टेक्निकल पढ़ लिया है, मैनेजमेंट पढ़ूंगा, फिर सुपरमैन बन जाऊंगा। During engineering, I learned my technical and analytical skills, and I want to do an MBA to learn how finance, marketing, HR, these business functions gel in together to reach my utmost goal of working in a great team and becoming a superman. Yeah, guys, it's absolutely very simple. You can see all 5 engineers out here doing MBA. More than half the college is engineers. There's only one reason: nobody wants to work and do their engineering wali job. Still unaware why, you know, did we do an MBA? No clue. सब कर रहे थे शायद, है ना? आपने तो बस की थी ताकि शादी में हो जाए अच्छी। आपका तो नहीं पता है मोटिवेशन। नहीं वो तो गलती से हो गया। I was just lucky. बिल्कुल, 4 साल इंजीनियरिंग में मजा नहीं आ रहा, तो लग रहा है क्या कर रहे हैं, उसके बाद नौकरी लगती है, उसमें 6 महीने पता चल जाता है ये तो हो नहीं पाएगी। हाँ, तो अभी क्या करें? लाइफ में थोड़ा और टाइम चाहिए, पहले टाइम चाहिए था तो इंजीनियरिंग कर लिया। हाँ, लाइफ में थोड़ा और टाइम चाहिए था। हाँ, तो ये पढ़ाई करनी है थोड़ा और 2 साल और, मतलब कुछ तो डिफरेंट काम नहीं करना है। एंड कॉलेज लाइफ इज रियली अमेजिंग, मतलब बी स्कूल अगर आप देखो ट्रू सेंस में, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यू एक्चुअली एंजॉय कॉलेज इन अ बी स्कूल ओनली। मतलब इंजीनियरिंग में तो क्या ही होता है, मतलब आप जा रहे हो, आपके पैरेलल में सांप चल रहा है। So you know it's no fun, but I think B school is really amazing. So B school, I you know I'm you know if it's any motivation to any of you, I believe you know it's really amazing. 2 साल में आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है, obviously if you survive it. ओके, चलो मूविंग टू द डीएलआर सेक्शन। चलो फटाफट, लोग डीएलआर की काफी डिमांड आ रही है भाई, तो एनी विच वेज, एंड बहुत सही से सवाल आ रहे हैं यार। तुम लोग भी चैट ज्वाइन कर लो, हम लोग एंड में थोड़ा फन करते हैं। व्हाई विश्वदीप सर इज सीरियस, सुधांशु सर शुड बी स्टैंड अप कॉमेडियन, मोइनाक सर आप बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, तो यू कैन टेक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो आपके लिए स्पेसिफिक आएंगे, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, पीपल वेरी इंट्रिगिंग क्वेश्चन फॉर सुधांशु। कौन सा वाला? 10:45. अच्छा, 10:45 I generally you know praise people in the class, तो मैं उनकी झूठी तारीफें करता हूँ। I know a lot of people you know who are you know training for CAT, बहुत सारे लोग घर पे रहते हैं। I am sure everyone knows कि घर पे रहना कैसा होता है, ठीक है, आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है धनिया लाने में, ठीक है, फूल गोभी पत्ता गोभी लाने में, एंड प्लस यू नो ऑन द टॉप ऑफ इट कुछ लोग तो काम भी कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे मुझे लगता है कि कुछ लोगों की थोड़ी झूठी तारीफ कर दी जाए तो
उनका जीवन सुखमय बना रहेगा. So that is why I do a lot of झूठी तारीफ at 10:45. So 10:45 is my झूठी तारीफ का time, wherein I do a lot of तारीफें at 10:45 for 1 minute. तो 1 मिनट में जम के लोगों की तारीफें करता हूँ, ठीक है, एंड लोग खुश हो जाते हैं, फिर लोग मेरी तारीफें करते हैं 15 मिनट. Lovely. People who joined recently to the chat, boys and girls, this is the CATKing family का एक हमारा छोटा वर्जन. 2 घोड़े हमारे थोड़े से बीमार हैं, बट आपको उनसे मिलवाया जाएगा. एंड वी डूइंग अ गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेशंस एंड होप यू गाइस आर हैविंग फन सो फार. और फोन साइड में छोड़ दो, वी गोना हैव फन. एंड दीस आर ऑल यंग folks. Moinak from FMS, Vishwadip Narsimon ji, Anisha ma'am from NMIMS, I'm from SPJain, you already know that. And हमारे सुधांशु सर, I'm Lucknow के. और ये तुम्हारे कोर लोग हैं who are running the show. गुरु पूर्णिमा है, आप लोग मेरी तारीफें कर करके इतने थक जाते हो. ये कर दिया सर आपने, वो कर दिया. मैं कुछ भी नहीं हूं इनके सामने. And trust me, we all exist because of these great people. So जो लोग CATKing family के already students हो, write a small comment when you guys go, chat में नीचे, and some thank you on this day of Guru Purnima. People who have studied from Moinak or who've got to the IIMs as well, and by listening to these great people, that's going to be my gift to these guys as well, and your gift for sure. चलो भैया, next part, data interpretation, logical reasoning, great. सुधांशु सर, आपको याद हो तो क्या स्कोर था आपका DILR में CAT के अंदर? So the last score that I remember was somewhere around 99.2. So I think DILR in particular, that was the time. CAT 15 was the first time when DILR was a shocker. So matlab that in fact that paper itself was a shocker to me. 2015 के पहले आप जितने भी DILR के पेपर्स देखो, बहुत ही चिल टाइप पेपर्स हैं. उन पेपर में कोई ज्यादा आपको चैलेंज फील नहीं होगा. तो मतलब I had फोरसीन कि मेरे को वर्बल में चैलेंज आएगा, बाकी तो मैं चिल टाइप सब निपटा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मेरे को, ठीक है. बट DILR वाज अ शॉकर. मतलब एक पॉइंट इन टाइम पे ड्यूरिंग द पेपर मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई गया, खेल खत्म, कुछ नहीं हो सकता. सो आई थिंक आई बिलीव वन थिंग दैट आई वांट टू टेल यू sort of during an exam advice is that don't give up, because you don't know that if a paper is difficult, it's difficult for everyone. And if you are panicking after so much effort in the last 1 year, you have to remember that everyone else is a human and everyone else will panic too. Yeah. Which means that you and it's a relative score, right? You don't have to, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी बहुत ही कम स्कोर में आपका 99 और 100 बन जाए. सो आई थिंक that is what helped. और उसके बाद DILR के बाद मेरा वर्बल का पेपर था, जिसके अंदर there were 34 questions. I had attempted 33 and I had got 32 correct. तो उसके बाद फिर मेरा my day was good. मेरे को लगा कि अब DILR में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन क्वांट में मैंने बहुत अमेजिंग मचा दिया है, तो मेरा दिन अच्छा है आज का. So that is why that is after which I went and I was like कि भाई अब तो मूवी देखेंगे, प्रेम रतन धन पायो मिली तो सिर्फ देख लिया. Great. Moinak, any tips about data interpretation, logical reasoning? What was your personality, if you remember that? Yes, I do. My scaled score was 53 out of 96 का होता था, right? So 96. It was 32 questions. Yeah. 32. It was 99.73 percentile okay, in great. CAT 18. So I think just like Sudhanshu sir said, because everybody is in the preparation phase now, I'll just share what happened to me on D-Day. कई बार बोला, although I'm not sure if people remember this. It was 24 minutes into the paper. Okay, 3 questions solve हुए थे. 24 minutes हो चुके हैं. And तब थोड़ा धक होना स्टार्ट हो गया. 36 minutes बाकी है, क्या होगा 3 questions में, तो कुछ नहीं होने वाला है. And at that moment, just what Sudhanshu sir mentioned, I thought, no, I can't give up. I have put in a lot of effort since May. I really need to calm down and just push ahead. Okay. And in the next 32 minutes, I solved 13 questions back to back. होते गए. And I was just in that zone. मेरे को करना है, मेरे को CAT साल निकालना है. I don't want to retake it anymore. And I don't know, somehow everything was correct. 17 questions. I attempted 14 more questions. All 17 were correct. So I got 51 as a raw score and 53 scale हुआ था. So the reason I'm sharing this story now with you guys is that you develop that mindset from now. CAT और psychology का exam है.
आप कितना भी prepare कर लो, if you see, I was prepared before LRDA section started for all those 17 questions, but those first 24 minutes, something happened and I was just not able to crack, get into my inner zone and get those questions out and, get the marks. वो psychology अभी सब guys develop करेंगे, you never know. Hero zero बन जाता है, zero hero बन जाता है, और hero hero ही रह जाता है. All three possibilities are there, okay? But zero zero कभी नहीं रहता है. I believe जो बंदा effort मारा है, वो zero नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं वो पहुंच जाएगा. Okay, so develop that psychology. And second tip is that consistency again. LRDI, if you notice, data interpretation, वो word बहुत अच्छे से याद रखिए guys. The reason, I'll give you a very logical reason why does LRDI. आप केस स्टडी जब करोगे ना MBA में आके, वो 21 पेज का पेपर होगा जिसको आप 2 स्लाइड में कंडेंस करोगे. Okay, so they are just trying to test whether you can take out the important things from the the noise that is present in the paper, note it down in a neat manner and get the answer out. Please practice how to note down data from day one. Somebody who's able to do that, in your panic situation, you will not forget things. कई बार आप देखोगे कैट ऐसा ट्विस्ट करता है, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 4 आर रिलेटेड, बट आपने क्वेश्चन 1 ऐसे तरीके से सॉल्व किया, क्वेश्चन 4 तक आते आते आउट, एंड देन यू आर डन. Okay, so please focus on these two things, mindset and how to note data. टेस्ट आप क्लासेस में सीखते रहोगे, मॉक्स में प्रैक्टिस करते रहोगे, वो आ जाएगा. बट ये दो चीजें डे 1 से नहीं करोगे, can get very messy by the time it's November. So that's from my side. What's your take on the real CAT mocks? What our team has prepared? Now we've got these IIM folks working under you and the whole team. So what is the level right now? You've given so many CATs, and now also you always solve these papers as well. But जो लोग अभी CATKing के mocks थे, last time 17,000 plus people gave these mocks. इस बार भी काफी लोग ले रहे हैं. So what's your take on that? क्या quality क्या ठीक है? So one thing that we have always maintained with the teams, आप question करके you can never determine what topic is that question from. That's because LRDI always either gives you DI based LR or LR based DI. उसमें आप ऐसा गुम जाते हो कि ये arrangements दिया है या फिर arrangements के अंदर cases दिया है, क्या दिया है. So that is one thing we maintain. Okay, we always maintain the set is a mystery because that's when you are forced to think for each and every set. Okay, it will never be the scenario. अच्छा ये तो हमने mock 2 में किया था, अरे ये mock 17 में वापस आ गया है, चलो ये तो मेरे को आता है. We just ensure that, and once we are ensuring that, we are forcing you to think for all the 5 sets which is going to come in all the 40 mocks. Essentially आपको 200 नए set मिलेंगे. Of course उस 200 में से CAT में आएगा कि नहीं, nobody can guarantee that. Okay, very logically will tell you one thing. CAT का जो setter होता है, even he places eyes on each and every player. He has to set 10 new sets. जो वो कर देगा. Here again I'm telling you guys, it's about mindset development. जो mindset develop कर लेता है, कोई भी set crack कर लेता है. Right. So just telling you boys and girls, so I'll tell you like which real CAT mocks need to be given this time. Anisha has got a team with IIM folks as well. So people who are serious about the preparation, non-CATKing जनता, take those mocks. It's going to be really amazing. और ये हम 4 लोगों की team. Anisha ma'am runs the whole show with IIM folks. And I will tell you like when needs to be done as well along with the other preparation, and then Moinak will solve the entire paper and record a video and tell you 2 hours के अंदर attempt कैसे करना है, and then you'll be thrown to Sudhanshu sir. तो ये हम 4 लोग हैं. Vishudip sir, I think the camera is off, but yeah, so give those mocks, going to be really helpful. ठीक है भाई, I think mocks वाला discussion अपन कभी हम और करेंगे because 12:47 मिनट हो चुके हैं. आज तो मतलब चलते ही जा रहा है, बहुत टॉपिक अपने हैं जो कवर कर सकते हैं. Let's read out the chat. Open to you, Moinak, if you want to pick up. Boys and girls, pick up any questions to Moinak sir, Anisha ma'am, me, Sudhanshu sir. कोई funny, कोई personal, जो आपको दिल के अंदर है सवाल पूछिए. आज है गुरु पूर्णिमा और आप कुछ भी पूछ सकते हैं. And let's have some fun as well. ठीक है भाई, और स्ट्रीम को लाइक पक्का ठोकीगा जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया. और मैंने इनको रिक्वेस्ट किया 11 बजे कि आ जाओ भाई स्ट्रीम पे, तो एंड दे वर ऑल सेड यस सर लेट्स डू दैट. सो लाइक इनके लिए, नॉट फॉर मी. हाँ, और जो लोग जाएंगे नीचे पक्का कमेंट करके जाना एनीथिंग गुड यू हैव लर्नड ऑन दिस चैनल और एनीथिंग गुड यू लर्नड फ्रॉम सुधांशु सर और प्रीत सर और एनीबॉडी फ्रॉम द CATKing family. दैट्स गोना मेक माय डे एंड मेक देयर डे एज वेल. या लेट्स बिगिन. हाँ भाई, एनी क्वेश्चन ऑन द चैट? you want फेवरेट स्नीकर्स ऑफ मोइनाक? स्नीकर्स बड़े फेमस हो रहे हैं भाई. What's about that? So I have an Air Jordan collection, so I keep buying Air Jordans जो इंडिया या फिर एशिया में अवेलेबल नहीं होते हैं, so मैं उनको मंगाता हूँ यूएस से या फिर यूरोप से. So I love collecting sneakers. अभी 11 Jordans हो चुके हैं. मैंने इंस्टा पे लिख के रखा है that I'm a sneakerhead. So if somebody is asking what's my favorite, so I have a Air Jordan called as a Rookie of the Year. उसका story is that Michael Jordan जो Rookie of the Year when he won the award, the shirt he was wearing, so that sneaker is inspired by that event in his life.
ये वो जो 2-3 लाख के होते हैं वो वाले हैं? हाँ, अराउंड, डिपेंड्स। कहाँ से आ रहे हैं पैसे इतने, मुझे पहले तो वो बताओ। 11 जूते सुधांशु, 3 लाख वाले भाई। सीरियसली। ये अपना यंग इंडिया है। ये है पावर ऑफ एफएमएस। पावर ऑफ एफएमएस भी है, एंड यंग इंडिया डज नॉट इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट्स। क्या बात है, गुड, दिस इज सो अमेजिंग, ग्रेट। या एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी फॉर एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन प्लीज आस्क। तब तक मैं जनरल क्वेश्चन, टिप फॉर नॉन इंजीनियर स्टूडेंट। पहली बात तो नॉन इंजीनियर, अपने आप को नॉन इंजीनियर छोड़ना बंद करो। तुम्हें सबसे बड़ी बात लगती है कि इंजीनियर बड़ा होशियार है, इनकी एक अलग ही, इनको एक कॉम्प्लेक्स रहता है, सर वो तो इंजीनियर है। अबे वो कौन सा इंजीनियर, उससे पूछ जाके उसको मैथ्स आता है कि नहीं आता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स को छोड़ो और मैथ्स को एम्ब्रेस करो। It'll take time for you to fall in love with maths, but embrace करो, don't run away from that. और अगर तुम्हारे कोई भाई बहन छोटे हैं 12वीं के बाद, उनको बोलो मैथ्स छोड़ो मत, हाँ मैथ्स रखो, बिकॉज अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, गूगल में भी जाना है, तो एप्टीट्यूड एग्जाम पक्का क्रैक करना पड़ेगा। नेवरदलेस, माय 2 cents, नंबर 1, पीपल आस्क मी लाइक नॉन इंजीनियर क्या करूं यार, इंटेंसिव तैयारी करो, मतलब साथ में स्नैप एंड मैट भी देखे रखो। मैं नहीं बोल रहा हूं तुम्हारा कैट नहीं क्रैक होगा, डेफिनेटली क्रैक होगा। 35% people, 33.5% people to be more precise, are in IIM Ahmedabad who are non-engineers. How cool is that? And similar stats are in Lucknow, Indore, Kozhikode, etc. of the world as well. And you talk about Narsi Monji, तो वहाँ पे 30 to 40%, Symbiosis 30 to 40%, वहाँ पे एक stable है। IIM Bangalore, IIM Calcutta थोड़ा सा इंजीनियर बायस हो गया लास्ट कुछ सालों के अंदर, बट बायस नहीं हो गया बिकॉज उनका सेक्शन कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो एक इंजीनियर बंदा वहां पहुंच पा रहा है, जहां पे अराउंड 78% मैं बोल सकता हूँ सिर्फ 2 कॉलेज में। बाकी यार तुम्हारे लिए सब कुछ सेम है। एंड लास्ट थिंग, अगर क्वांट हाथ से जाता नजर आएगा तो पढ़ाई करो अपनी वर्बल एबिलिटी की, एंड टेक दिस सेक्शन एंड मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड किल वर्बल एबिलिटी। अंकिता मैम हमारे IIM अहमदाबाद से हैं और बहुत अमेजिंग इंसान है, शी इज आल्सो हेल्प मेकिंग मॉक्स एज वेल, और उनका कैट के अंदर वर्बल एबिलिटी वाज मच मोर देन क्वांट। क्वांट के अंदर 98 97 था, डीएल के अंदर 98 99 था, और वर्बल वाज 99.91। समझ आ रही है? तो अगर IIM ABC के सपने देख रहे हो, वर्बल एबिलिटी पढ़ो। इट्स गोना बी माय 2 cents फॉर नॉन इंजीनियर्स, ठीक है। एनी क्वेश्चंस फॉर एनीवन? अनीशा मैम आपका कुछ क्वेश्चन या सुधांशु, एनीथिंग यू वांट टू पिक अप? A lot of people have been asking when do we start preparing for NMAT and that. So guys, honestly, your NMAT and your CAT is 80% same syllabus. You have to do 20% things which is extra. So don't wait for the last minute. I mean, you should start right now itself. Like what we are also doing in the same ratio itself. Monday to Friday, you're doing the 80% part, which is common for all exams. And over the weekend, we're doing what is specific to NMAT, so that you have that in your safety net. Like, you know, I personally suggest everybody that your target should be, my first exam is going to be NMAT and not CAT, because it's easier. It's based on your capability. So it's an adaptive exam, right? So NMAT ज़्यादा अच्छे से perform करके आओ, CAT में भी अपने आप अपना confidence बढ़ जाएगा. So definitely you should start now, so that your target is कि 5th October I should be ready with my NMAT preparation. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सुधांशु सर आपके लिए। योर कंपनीज एंड पैकेजेस, और बंदे ने साथ में वो भी लिखा है कि डोंट वरी, इनकम टैक्स पीपल वोंट कम। नहीं, मैं हर साल इनकम टैक्स भर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। So I think ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, but I think it's anybody's guess. आप you can very easily check the packages that are there, and और उसके ऊपर कैगर भी मैंने आपको सिखाया है, तो कैगर लगाओ, उसके ऊपर डबल डिजिट कैगर लगाना, अच्छा वाला डबल डिजिट, फिर पहुंचो, फिर कहाँ पहुंचोगे पता चल जाएगा। आई थिंक वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज समवन आस्किंग अबाउट माय ट्रॉपिकाना ब्रांड। सो माय ट्रॉपिकाना ब्रांड इज मिक्स्ड फ्रूट। तो ट्रॉपिकाना हम लोग बेसिकली फ्राइडे को वीकेंड वाले सेशन में खोलते हैं। So when we have to, अगर कोई बहकी बातें क्लास में ज्यादा करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये ट्रॉपिकाना पी चुका है, इसका ट्रॉपिकाना खुल गया है। So I think mixed fruit, guys, mixed fruit is really amazing if in case you want to try it out. I think अभी के लिए I think सोमरस से दूरी बनाए रखें, ठीक है। सोमरस से दूरी बनाए रखें, आपका भी समय आएगा, ठीक है। आपको चाहिए तो मैं कुछ बढ़िया इंस्टी पार्टी वाले वीडियोस भेजता रहूंगा। मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस के इंस्टी पार्टी के वीडियोस आते रहते हैं, तो अगर आपको चाहिए आई विल शेयर दोज इंस्टी पार्टी वीडियोस विद ऑल ऑफ यू। तो थोड़े टाइम के लिए लेट्स वेट, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप
सुबह सुबह 7:30 बजे तक की पार्टीज और ब्रेकफास्ट सब मिलेगा आपको। क्या बात, that's going to double your motivation to get into IIMs. Great यार, great. कोई और है जो मैथ्स से बहुत दूर है? आई थिंक इतना मोटिवेशन काफी है कि कुछ कुछ और बताऊं आपको। ब्लू लेवल का सवाल आया, अभी गुरु पूर्णिमा वाला सेशन चल रहा है, मेरे आसपास ही कुछ बहुत अच्छा, वो पीछे व्हाइट वाला दिख रहा है, वो एक बहुत ही बढ़िया बार है, तुम क्रैक कर लो एक बार जिंदगी, अपन बैठ के चिल करेंगे। और जो लोग तो पवाई आते हैं ना, IIT बॉम्बे, बिटसॉम, NM बॉम्बे, तो हम पार्टीज करते रहते, तुम तुम्हारे साथ मिलेंगे। ग्रेट, एनी मोर क्वेश्चन? Moinak sir, anything you want to pick up? I just read one question where someone said, how do I skip words in RC? Actually, my friend, I'm not skipping words. मेरे को RC पढ़ते पढ़ते इतना आदत हो गया ना that I only speak out words which are important. Okay, and the reason I'm doing it is so that you guys understand is which are the words I'm picking up from an RC. Even in that 600 word RC, maybe only 250 are important to answer questions. Yeah, so absolutely. That is the motivation. I'm not skipping anything here. In fact, to all of you, my suggestion would be you should do a muted reading. ठीक है, अदरवाइज बाकी लोगों को भी आपसे परेशानी होगी, एंड गोइंग फॉरवर्ड भी आप आप बोल के नहीं पढ़ सकते, आप यू विल बी, आप एयरपोर्ट में होगे कोई और आप फ्लाइट में बैठे होगे, आप बोल के पढ़ो, बगल वाला थप्पड़ मार देगा आपको। तो सो मेक इट अ हैबिट, यू, एंड आल्सो इफ यू स्पीक, there is a limitation to the number of words you can speak, right. If you don't speak, your reading speed also improves. राइट राइट। अच्छा, बहुत सारा सवाल आ रहा है कि अपना वो बताओ, पैकेज बताओ, पैकेज। देखो मैं तुम्हें पैकेज मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया था, 3-4 लोगों का मिलके 1.5 करोड़ के आसपास होता है। मैं अभी किसी का इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ, MBA करने के 1-1.5 साल 2 साल के बाद, डिपेंडिंग उसने एक आधी कंपनी शिफ्ट कर दी हो तो ये होता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना पैकेज नहीं बता रहा हूँ। मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं, मेरी बैचमेट्स, SPJain के जो भी है, कि जॉमी का चीफ बन चुका है, तो कोई ब्लू डार्ट में बहुत आगे बढ़ चुका है, और जितने भी लोग हैं सारे अप्रोक्सीमेटली 10 years आफ्टर ग्रेजुएशन, एवरीवन, मैं थोड़ा सा डेल्टा कम लेके बोल रहा हूँ, इन इंडिया एवरीवन इज एट अ पैकेज ऑफ 1 करोड़ से लेके 1.5 CR in their 10 years of graduation of MBA from top business school in the country. मैं आपको SPJain बॉम्बे का एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ आ रही है? अब तुम एक एक बंदे का पूछो मत, मैं तुम्हें बता दिया 10 साल के बाद तुम्हारा 1 करोड़ होने वाला है। एवरेज ऑफ SPJain बॉम्बे इज 32 लाख, एवरेज ऑफ मोइनाक FMS का भी 32 लाख है इस बार, 32 पॉइंट और चल रहा है, 32 सिमिलर मोर और लेस इज IIM Lucknow एज वेल। IIM Lucknow थोड़ा ज्यादा है, 33 या 34 है शायद। यस, सो हां, अभी थोड़ा इंप्रूव हो गया है, 33 34, एंड NRC Moji is also at 24 25, right Nisha? 24 अराउंड 24 के आसपास। तो भाई तुम पैकेज की टेंशन मत लो, आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? वर्किंग जनता कैसे कहते हैं यार? कुछ फन वाले क्वेश्चन पूछो यार, तुम लोग आज के दिन भी थैंक यू नहीं बोल रहे हो। ठीक है, कुछ फन करते हैं। लेकिन हम फिर भी हम सीरियस क्वेश्चन में भी फन कर रहे हैं। हमको क्वेश्चन फन वाले आए या ना आए, हम फन करेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है। वन क्वेश्चन टू राहुल सर, हाउ विल रीडिंग हेल्प ऑन डेली बेसिस? भैया मैं बता रहा हूँ, अगर अंग्रेजी में बहुत बुरे हाल है, तुम अखबार रोज पढ़ लो और छोड़ दो एक बार एऑन भी छोड़ दो, तुम थोड़ी देर के लिए गरीबों हिंदू भी छोड़ दो, तुम टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ लो, और 1 घंटा रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, बिन नागा। कोई इन्वेस्टमेंट, वो सब लोगों के घर पे आती होगी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई ढूंढना है, बिल्कुल गरीब लेवल। और तू 40 दिन के लिए खुद घर बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया पूरी अखबार पढ़, सुबह से लेके शाम तक, वर्ड्स नोट कर, तू 1 महीने बाद तू चेंज पर्सन होगा। ठीक है, ये लेवल 0 है। लेवल 1, जंप ऑन टू हिंदू, बेटर न्यूज़पेपर, अगर अखबारों पढ़ के निकालना है। लेवल नंबर 3, कैट लेवल, जो मैं आपको सिखाता हूँ, एऑन एसेज, गार्डियन, स्मिथसोनियन, जहां से कैट आता है वो पकड़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, वो लेवल 3 है। अगर कैट 5 महीने में, तो लेवल 3 से ही स्टार्ट कर सकते हो, अंग्रेजी तो अंग्रेजी रहती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ओके, 630 people or like, Sudhanshu sir, anything you want to answer? Anisha ma'am? There was one more question with respect to ki Nmat and Snap ka level, is it easier than CAT? So honestly, it is easier than CAT for sure. That's why you must be giving, like, easiest of all exams for sure is going to be your Snap. It's 60 minutes, 60 questions. You'll be out of the exam in no time. So that's definitely easy. And Nmat, like I told you before, it's adaptive. So it's easy if you have worked hard. स्नैप के भैया मॉक्स दे देना, रियल स्नैप मॉक्स। हमारे अच्छी बात है कि जो स्नैप के टॉपर स्नैप के मॉक बनाते हैं, तो IIMs के लोग, जिससे IIM के लोग होते हैं, उस इस बार IIM Bangalore, we've hired 5 people from IIM Bangalore who are going to be testing the mocks before Moinak starts solving that. पिछली बार Moinak, we had IIM Ahmedabad guys, if you remember that, who were actually making 1 and 1
each one mock. इस बार IIM Bangalore तो वो आएंगे. तो Snap और Nmat की भी Nmat toppers बनाते हैं because they've given the examination. You know, they've lived their life. They know that emotion of that paper setter who is from IIM Bangalore as well. इस बार के paper setter मिश्रा जी हैं जो कि IIM Bangalore के हैं, उनके बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं. बहुत ही मजा आ रहा है. तुम्हें जाने का दिल नहीं कर रहा, नहीं तो अकेले सेशन लगता हो ना, ऐसा लग रहा है कोई आया आज हमारे घर में, तो बड़ा ही मजा आ रहा है. What kind of fun life there is inside the B school at Rahul sir? मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई, बाकी लोग भी तो हैं, मैं ही लगता हूँ इनमें से बिगड़ा. तो करण वर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं. Let's talk to Moinak. Moinak, what is the fun life at FMS? One of the best and the dream business schools of India. People are leaving IIM Ahmedabad for that. Fun होता है कि नहीं, पढ़ाई करते रहते हैं? FMS का लाइफ काफी इंटरेस्टिंग होता है. Okay, I won't really go into the details of it. You know, that is for people who make it over there. But I can tell you one thing. एक चीज है guys, if you're from DU, if you've seen North Campus, आपको पता है. You know, it's like a huge square of just youngsters having fun. बहुत टाइप की चीज होती है. DU elections होते हैं, उनके अलग मजे होते हैं. हर DU कॉलेज का फेस्ट होता है, उसका अलग मजा होता है. राइट, आप CP चले जाओ, कहीं भी जाओ, हमारे खुद के पार्टीज होते हैं. It's an amazing life inside. I think it's true for all B schools. Sudhanshu sir, IIM Lucknow is lit. I've been to your fests. You know, उनको बहुत मजा आया था वहाँ पे जाके. So it's about reaching that place. वो एक बार वो जगह पहुंच गए ना, अच्छा, CAT is a prestigious exam because it takes you to a certain pedestal. Okay, and once you are there, you know, you are given that push enough because of that environment that you go up eventually. You know, it's very difficult to fail once you reach that system. So life is great. But आप उस life को याद रखो and just, you know, just see yourself today and look up and like, you know, I want to take a leap over there. Okay. Super. No B school person is greater than someone in anything else. But two, first is people management and time management. People management अभी आपको खुद को मैनेज करना है, तो प्लीज अब 6 महीने वो करो. एंड टाइम मैनेजमेंट तो अब लाइफ टाइम एनीवेज करने ही वाले हो. ये दो चीज कर लिया, कैट निकल जाएगा, जिंदगी भी ऐश हो जाएगी. एंड टेस्ट, you won't have to ask us questions like I'm packages. This is you need not ask question about packages there. It's about the fun, that 2 years what you're going to have, what you're going to be living your life there. That's it. Anisha ma'am, how is the life, what's the fun side of B schools? Do NM guys have fun? So I think NM guys have a lot of fun. A lot of people come to Mumbai specifically to have fun. You have the best nightlife out here, but it all you have good friends, you have competitive friends. 600 लोग हैं, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं to party and celebrate. You're every alternate day celebrating with different group of friends. And there's so many clubs also, right? So many clubs. Absolutely. Yeah. So you I mean, I'll not tell all of your things like Moinak mentioned, but you know, NM does, as council we used to do sponsorship करते हैं ना लोग. हम जाके clubs के साथ tie up करते थे कि पूरे साल में हम आपके साथ में 100 parties करेंगे. So हमें concession मिलनी चाहिए. 100 party एक कॉलेज की नहीं, एक डिवीजन की थी हमारी, मतलब पूरे कॉलेज की नहीं, ये हमारे सिर्फ डिवीजन की थी. So NMAT नहीं देना बच्चों, पढ़ाई नहीं करोगे तुम, ये अच्छी बात नहीं है. NMAT देने के बाद हम हर चीज सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स फेस्ट में जीते, चाहे हम कोई कंपनी अच्छी प्लेसमेंट हो गई, केस स्टडी कंपटीशन. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सेलिब्रेट. We'll enjoy all of that, but first get in there. Get in there. Great. Sudhanshu, the life and fun side of IIM Lucknow. I think अनीशा मैम ने नाइट लाइफ की बात करी है, मैं वाइल्ड लाइफ की बात करता हूँ. यूपी लखनऊ में नाइट लाइफ नहीं होता, वाइल्ड लाइफ होता है. तो सबसे पहला पार्ट वाइल्ड लाइफ का. देयर आर 7 species of snakes. You know, at IIM लखनऊ मैंने 4 देखा है वहाँ पे. ठीक है, 3 अभी भी देखना रह गया. इसी चक्कर में रिक्रूटमेंट के लिए कभी-कभी चला जाता हूँ. So I think the place is really amazing. You know, you meet such amazing people there, such amazing diversity. आपको अपने जैसे भी कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हूँ. तो बहुत सारी चीजें आपके साथ होती हैं, यू रियलाइज कि नहीं यार, यू नो, यू नीड टू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट. यू नो, आप शायद उतने भी ज्यादा अमेजिंग नहीं हो जितना आप समझ रहे हो. So I think it's a very beautiful journey, you know, made by bits and pieces. You make some really amazing friends. We have a group called Titanic. You know, so there is a place called Titanic जहाँ पे हम पार्टी करते थे. We had a group called Titanic जहाँ पे हम मतलब, so we used to organize a lot of
unofficial parties in the club. College का जो डॉक्टर थे वो हमको बहुत अच्छे से जानते थे, because हम आए दिन उनको हॉस्पिटल में मिलते थे अगले दिन सुबह क्योंकि and I think that is the most amazing part. The clubs and committees are really amazing. So I was part of the official music club. I was the lead vocalist for 3.4, which is the official music club of IIM Lucknow. So I think a lot of opportunities, to express yourself, to be your best self and to enjoy life to the fullest. I believe those 2 years truly have been the best time of my life. So I think I wish everyone gets that. I just wish that if you get to live that life, I think बहुत सारी चीजें लाइफ में क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, what matters, what does not matter, and I think we make some really good friends there. So I think from that standpoint also, I wish you all the very best. And सब कुछ बता दूंगा तो motivation पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा. You're gonna have a lot of fun whether you join any of the SPJain Bombay. थोड़ा सा strict है वैसे, being honest, बड़ा ही ethical थोड़ा सा है. पता नहीं वो वीडियो सुन ना रहे हो मेरे, मैं डायरेक्टर साहब को जानता हूँ, but बहुत amazing college है. You're in Bombay यार. After all, you're in Bombay. Bombay is like the party place of the country. हमारे टाइम में तो क्लब्स वगैरह 3-4 बजे तक खुल रहे थे. तो गुड मरीन ड्राइव एंड चिल, सब लोग ये बॉम्बे रह चुके हैं. गुड मरीन ड्राइव एंड चिल सेट ऑफ पीपल. नारसी मुंजी पड़ोस में ही है. बिजनेस स्कूल में इवेंट में जाना है, नारसी मुंजी में जाओ, हैव अ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ टीम, तो जाओ ऑन द डे कंपटीशन है. 25,000 रुपए सुबह जाके शाम को जीत के आ सकते हो तुम. ऐसा है. टिस भी चेंबूर में है, अराउंड आई थिंक हाफ एन आवर. आईआईटी बॉम्बे मेरे घर के पीछे अभी तो, बट आईआईटी बॉम्बे इज आल्सो लाइक 30 minutes away, 40 minutes away on good times, on bad good traffic days. But any which ways, जमनाल बाजार भी यहीं पे है. तो it's a I would say Bombay's got so many B schools in the best thing is you're staying with good people. सबने यहाँ पे about the party life etc. You party with good set of people. That's it. I tell this to the world, and हर बंदे को MBA सिर्फ इसीलिए करनी है for peers. पैसा will flow, money will flow, girlfriend वो सब आ जाएगी, but एक set of peers, आज सुधांशु के amazing friends होंगे. सुधांशु CA से लेके investment banker से लेके सब लोग अपने पास हैं, right, Moinak? You got everything who is like call away. You want to do your own startup, call away. And the good thing is people who have fun. Yeah, people have fun. And that's the difference between 2 years of MBA and 2 years of 4 years of engineering. There, you're not grown up. There, when you drink, you get drunk. Here, when you drink, you enjoy the drink and with the people, and you know where to stop now. You've done that enough in engineering college. So it's a good life. It's an amazing life. But any which ways, this is so amazing. Touching 600 people are still live in the night. Oh, मेरे से dislike हो गया. भाई like ठोकना यार. We talking about drinks. So yeah, thank you so much for joining in everyone on the chat. And this is such an amazing day. Thank you लिखो chat के अंदर to Anisha ma'am, Moinak sir, Sudhanshu, Bishadip sir just got dropped. उनका internet connection had some trouble, but it was lovely having you on board, Sudhanshu, dil se yaar. And people again, people who think CATKing is only CATKing वाले sir, CATKing वाले sir, मैं नहीं यहाँ पे CATKing वाले sir बहुत सारे और भी लोग हैं, including Sudhanshu and Moinak. And Moinak heads our product when it comes to running our entire mocks and solving them. And Sudhanshu and Anisha ma'am, they're all there with us. So thanks Sudhanshu, and happy Guru Purnima to all of you once again. Sir, happy Guru Purnima to you too. I think you've been running the show and quite flawlessly. I think I believe it's such a great association with you all, and it always feels like family. So I think cheers to you. आप इस कहानी के सूत्रधार हैं. So बस क्यों ले रहा है सुधांशु? चैट के पहले मैंने सुधांशु को अपना बार खोल के दिखाया था, and I showed him some drinks. He's like, I'm going to come. मैं रखूंगा. But anyway, thank you. Thank you, Sudhanshu. Thank you so much for kind words. It's lovely. Great, yaar, great. So people in the chat, before you guys leave, drop in a nice comment. Wish them happy Guru Purnima if you're a CATKing student or a YouTube family student. मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु वो ढूंढो जिससे लय जुड़ जाए. अगर आपकी लय जुड़ी है, रात को 1 बजे तक हम आपके साथ सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना खाना खाए हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं. मैंने तो नहीं खाया, इनका भी क्लास था. I was teaching from 7 o'clock onwards. Thank you so much, and drop in a nice comment. We'll pick up the
best 5 comments and give one of the best 5 books which I love, and I'll ship it to you by tomorrow or day after tomorrow. And कोई आपने कुछ सीखा, एक दूसरे को इंस्पायर करना है तो एक थोड़ा सा लिख के बताइए. If you love Moinak or Sudhanshu or Anisha ma'am, Vishnudeep sir, Sahil sir, or anybody on the channel, कुछ अच्छा हो तो लिख के जाएगा. And happy Guru Purnima. Thanks Anisha, thanks Moinak for joining in, and thank you Sudhanshu. Thank you guys. ओवर कॉन्फिडेंस वाली जनता, एड्रेस भी छोड़ देना साथ में. I think thanks to all the people also who've been listening to us and giving so much love, and a big thanks to Rahul sir, like Sudhanshu mentioned about Sutradhar. So I think I've told this before as well. He said choose a guru. So you have chosen one. You have chosen all of these people. It's follow them throughout the life. I mean, I am here today probably talking confidently is thanks to him. Cracking NMIMS and interviews. It's okay to crack exams, but you don't get the confidence to even talk in interviews. So I used to never talk in my interviews, and I was told then you'll always just keep getting 99 percentile in exams and sit in the same IT job. And I made sure I cracked every interview after that, and with all the learnings, every day learning how to take different sessions, I am sitting out here giving inputs to all of you. So thank you so much, Rahul sir. I think it's an amazing journey for me personally and for a lot of other students, and on behalf of them, and I would say thanks for guiding us and being the captain of this ship for us. Thank you so much. Thank you so much. I'm overwhelmed. Thank you so much again for joining in. Have a good night, guys. And people on the chat, I'll look at your comments and reply to you. God bless you guys. Bye, Sudhanshu. Bye, Moinak. We'll get on the call. Bye, Anisha. Take care. Thank you, guys. Bye. Take care. Bye, guys. Bye. Bye-bye. Happy Guru Purnima again to you. Thank you. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye.